Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the another exercise. In this exercise we are going to complete the chapter number 69 exercises of JavaScript. So let's start it. Question number 1 is actually this chapter number 69 we have started the objects chapters. So यहाँ से हमारे पास object के chapter start होने वाले हैं. So ये basic से start होगा to the advanced level. So start करते हैं. Question number 1 से. Question number 1 is what do you call a value that is attached to an object? तो आपको पता है एक ही word में जवाब देना है. What do you call a value? वो value को हम क्या कहते हैं जो कि object के साथ attach होती है? That is called property. As you know, property. Check your answer. The answer is correct. The next question is that object is lot31. One of its property is size. How do you refer to the property in code? It's very simple. Just write lot31 dot size like this. Check your answer, and the answer is correct. Next question: with what two characters do you end the definition of an object and its property? Yes, you know the curly braces and semicolon. Check your answer. Yes, the answer is correct. Next question: quote the first line of an object definition. Give the object any legal variable name. Okay, दे देते हैं. For example, we plan one and equal parentheses, sorry, curly braces, and check your answer. Yes, the answer is correct. The next question is drag and drop. Define an object species 99 that has two properties: species, feline, and average height 8. Okay, कर लेते हैं. वेरिएबल बना लेते हैं. वेरिएबल था हमारे साथ वेरिएबल species. Sorry, species 99 वेरिएबल था हमारे साथ species 99. Okay, species 99 equal to ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज यहाँ तक ले आते हैं. एंड फर्स्ट हमारे साथ है स्पीशीज कॉलन और स्ट्रिंग के अंदर feline एंड हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी है. सो वी विल यूज कॉमा एंड एवरेज वेट वाज व्हाट 8. एवरेज वेट वाज 8 एंड सेमीकोलन बंद कर देंगे. हमारे साथ कंप्लीट हो चुका है. एंड चेक और कोड विद द करेक्ट आंसर. चेक करते हैं कि सही लिखा हमने कि नहीं. सो द कोड इज alright. I will click on I got it right. Okay, color the line that defines the first of three properties. Color of an object, its value is red. अच्छा, value red है. So simply लिख देते हैं first one color, C color, colon and commas red comma close and comma. Okay, the next question is define an object area 1 whose only property is size with a value of 1.3. Okay, variable what? Area 1. Area 1 बना दिया. Object and curly braces size. Right? Okay. टैब लेना है. टैब ले लेते हैं. दो स्पेसेस देने होंगे तभी ये ले नहीं रहा तो दो स्पेसेस दे दिए. एंड व्हाट इज साइज? प्रॉपर्टी है साइज कॉलन कितना वैल्यू क्या है 1.2. right, not right, 1.2 and bracket close semicolon, and the answer is correct. Next question is assign the property of an object to a variable that hasn't been declared before. Okay, बना देते अपनी तरफ से एक like current position equal, for example, song2 chart rank. We are going to check song2 dot rank. Check answer. Answer is correct. Define an object which has two properties that are whole numbers. So speech का try कर लेते हैं. Like I have an object speech and the first property is duration full colon and the duration should be 90 comma, and the second is rating. The rating should be whole number, that should be
We should enter one and check our answer. The answer is correct. Next question. Define an object which has two properties. The first property is string. The second property is whole number. तो यही speech की example ले लेते हैं और जल्दी से इसी को दोबारा लिख लेते हैं. तो फर्स्ट हमें string लिखना है तो string के लिए हम title को use कर लेते हैं. टाइटल में हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं. CS with आलम कॉमा सेकंड भी हमने देना है तो फॉर एग्जांपल रेटिंग दे देते हैं क्योंकि वो सेकंड क्या मांग रहा है. सेकंड कह रहा है कि होल नंबर आपने यूज करना है. सो रेटिंग यूज की और रेटिंग कितने डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल 0 डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज semicolon check your answer. Answer is correct. Next question. Put the first line of an if statement that tests whether the qty property of object product का ये property is greater than this. So लिख लेते हैं if product का product product के अंदर हमारे साथ qty प्रॉपर्टी है अगर वो 1000 से ज्यादा है तो इधर ब्रैकेट लगा दी है. गलत कर दिया. ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं. चेक और आंसर. आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट डिफाइन एन ऑब्जेक्ट दैट हैज थ्री प्रॉपर्टीज दैट आर सम combination of strings and numbers. Okay, string and numbers का combination का कर लेते हैं. For example product का बना लिया. For example I have a product number 8 and the first property is color. Color should be like first one is red. Color should be red. Comma. Second property like size and I will assign it for example medium and comma. The third property should be a number, so I will write qty, I mean quantity, and I will write 7 bracket close semicolon. Check our answer. The answer is correct. Next, assign the property of an object to a variable that hasn't been declared beforehand. Okay, बना लेते हैं जैसे अभी पहले बनाया था क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक. तो वही सेम हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं song dot rank semicolon and check our answer. Answer is correct. Next question. Define an object which has two properties that are whole numbers. जो कि whole number है. ठीक है. बना लेते हैं speech का जैसे अभी बना लिया. Variable speech equal to bracket. First लिख लेंगे duration का. Duration का spelling I hope कि ठीक रहेगा. 90. Sorry. Second हम क्या करेंगे कॉमा देके रेटिंग दिया था तो रेटिंग दे देते हैं 0 and bracket बंद semicolon and check our answer. Answer is correct. Define an object which has two properties. The first property is string. The second property is whole number. Okay. Again speech का use कर लेते हैं और title लिख लेते हैं यहाँ पे जो कि अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था. तो मैं लिख लेता हूँ CS with आलम comma और rating को कर लेते हैं 0 enter bracket semicolon. Check our answer. Answer is correct. Next question is for the first line of an if statement that tests whether the qty of object product is greater than 1000. Already अभी हमने कर चुके हैं तो दोबारा से आ गया तो दोबारा लिखते हैं if product object के अंदर qty प्रॉपर्टी 1000 से ज्यादा हो तो जाके ये करो. Okay, the answer is correct. Next question is define an object that has three properties that are some combination of strings and numbers. So अभी हमने नंबर वो कलर वगैरह वाला किया था तो दोबारा से कर देते हैं. Variable product 8 था product 9 कर देते हैं और first should be color and the color should be red. Not should be, it can be red. comma. Second property दी थी हमने size की तो size में कह देता हूँ medium. ये दो स्ट्रिंग हो गए. अगेन कॉमा और इसके बाद क्वांटिटी तो qty और कह देता हूँ नॉट क्वांटिटी है और ब्रैकेट बंद semicolon. Check our answer. The answer is correct. Next question is for the first line of an if statement that tests whether a property of one object is same as the property of another object. ठीक है चेक करते हैं. चेक लगा लेते हैं. if अगर obj object number 0 dot location क्या हो बराबर हो strictly equal to
obj for example 28 number obj 28 नंबर के लोकेशन के साथ सेम हो तो like this so what तो फिर बोर्ड में बताएंगे तो हमारा कंडीशन ठीक है ओके एड एन अलर्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पेयर दैट डिस्प्ले हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी देयर आर डोंट चेंज एनी ऑफ माय कोड ये कोड को हमने चेंज नहीं करना इट मे नॉट वर्क ओके क्या करना है यहीं पर ही हमने ऐड करना है अलर्ट लगानी है तो अलर्ट किसके लगाना है प्रोडक्ट बी में जितने यूनिट्स हैं उसके लिए अलर्ट लगाना है तो लगा लेते हैं अलर्ट किसका प्रोडक्ट बी ये यूनिट्स का एंड लास्ट वन इज सेमी कॉलन कह देते हैं रन इट जी हाँ 11 है तो हमारे साथ ये रन हो चुका है ओके है आई विल क्लिक आई गॉट इट राइट create an object with two properties display one of the properties in alert ओके अपना बनाते हैं कंप्लीट तो बना लेते हैं प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट बी उसने नाम दिया था जी हाँ वही हम भी दे देते हैं और फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम दे देते हैं नेम name like rubber duck okay we'll use rubber duck you can write anything here name आ गया और units लिख लेते हैं units कितनी units 6 11 है और जाके इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे and now alert sorry alert why it's happening like this alert किसको प्रोडक्ट बी के ऑब्जेक्ट से units को units and semicolon and I will click on run it. Yes, run हो चुका है. I will click on I got it right and our chapter number 69 objects has completed right now. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for next exercise. Allah Hafiz.